Hello students, welcome back to this YouTube channel. Today in the series of 11th Commerce CCSP chapter number 4 from CC layout of business letter. In today's video we'll learn about the optional or occasional parts of business letter. Till now we have studied about the places where regular parts or occasional parts of letters are mentioned. We have learned about regular parts of the letters in detail, and today we'll learn about the occasional or optional parts of business letter. So there are in total 8 parts, 8 optional parts of business letter which can be used if needed in a business letter. The first one is personal and other notation. Talking about personal and other notation, when the letter writers expect the receivers pay prompt attention to the letters, keep the matters confidential or supply proper reply, then in that case in the top upper blank part, the letter of instructions like urgent, personal, confidential, priority are written in bold letters or with different colored inks. पर्सनल नोटेशन हमने देखा कि डेट के जस्ट बाद पर्सनल नोटेशन लिखा जाता है, डेट के प्लेस पे डेट के पास पर्सनल नोटेशन लिखा जाता है. पर्सनल नोटेशन में जब कोई रिसीवर ऑफ द लेटर ये चाहता है कि जो सेंडर ऑफ द लेटर ये चाहता है कि जो रिसीवर है वो कॉन्फिडेंशियल रखे या प्रॉपर ध्यान दे या प्रॉपर रिप्लाई करे, तो उस जगह पे अर्जेंट, पर्सनल, कॉन्फिडेंशियल, प्रायोरिटी या तो बोल्ड लेटर्स में या फिर किसी दूसरे कलर की इंक से लिखा जाता है जिससे तुरंत रीडेबल हो. At times these expressions are underlined. कभी कभी अगर हम बोल्ड या डिफरेंट लेटर्स में लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन कर देते हैं to draw the attention of the reader. Because of it, any person in a firm or institute would not open or read the letter or do the needful. It is advisable to mention notation of these types on the envelope. और personal notations अंदर लेटर के साथ साथ लिखने के साथ साथ अगर कोई confidential है या personal है तो it should also be mentioned on the envelopes. Okay, next one is attention line. The letter writer would mention the address of the receiver as a part of inside address as well on the envelope. But when he expects that particular person of the institute firm should receive the letter and he only should pay attention and do the needful, then the name of that person is mentioned as a part of attention line. Generally क्या कह रहा है attention line के envelope पे और inside address में हम ये तो mention कर देते हैं कि किसको receive करना है, कौन receiver of the letter है. लेकिन फॉर एग्जांपल कोई ऐसी इंस्टीट्यूट है या कोई ऐसा फॉर्म है जिसमें नंबर ऑफ पर्संस है जो उस लेटर को रिसीव कर सकते हैं या उस लेटर पे रिप्लाई कर सकते हैं और हम चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर एक ही जवाब दे, देन वी यूज द अटेंशन लाइन. फॉर एग्जांपल हम अगर किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को लेटर लिखना चाहते हैं और उसमें प्रोडक्शन मैनेजर या प्रोडक्शन सुपरवाइजर 4 प्रोडक्शन सुपरवाइजर है, उसमें से हम चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर एक ही प्रोडक्शन सुपरवाइजर उस लेटर को पढ़े या रिप्लाई करे या उस लेटर पर ध्यान दे, तो हम उसको अटेंशन लाइन में मेंशन कर सकते हैं. ओके, लेट अस सी एन एग्जांपल. सी द मैनेजर अनंत ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड अहमदाबाद. अब यहाँ सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे फॉर द अटेंशन ऑफ श्री अमरेंद्र पारगी और अटेंशन श्री अमरेंद्र पारगी. मीन्स जो भी मैनेजर होंगे उसमें से अमरेंद्र पारगी जो मैनेजर है वो उस पर्टिकुलर लेटर पे ध्यान दे, ऐसा हम चाहते हैं. ओके, और जनरली इनसाइड एड्रेस और सैल्यूटेशन के बीच में सब्जेक्ट से पहले अटेंशन लाइन हम मेंशन करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट वन इज सब्जेक्ट लाइन. सब्जेक्ट लाइन इंडिकेट्स फॉर व्हाट पर्पस वी आर राइटिंग द लेटर, इंडिकेट्स द पर्पस ऑफ राइटिंग अ लेटर. जनरली सब्जेक्ट लाइन ऑप्शनल है लेकिन हम सब्जेक्ट लाइन को एज अ रेगुलर पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर ही कंसीडर करते हैं बिकॉज एवरीवन ऑफ नाउअडेज यूज सब्जेक्ट लाइन. इवन इन द मेल वी यूज सब्जेक्ट्स. ओके, सो दिस लाइन कैन बी रिटन बिटवीन inside address and salutation. ओके, जनरली लिखने को तो आफ्टर सैल्यूटेशन भी लिख सकते हैं लेकिन ये जनरली इनसाइड एड्रेस और सैल्यूटेशन के बीच में ही लिखी जाती है. सब्जेक्ट लाइन इज इंडिकेटेड बाय अंडरलाइनिंग इट और राइटिंग इट इन अ बोल्ड लेटर्स. सेंटर ऑफ द पेज लिखी जाती है. एग्जांपल सब्जेक्ट होलसेल परचेस ऑफ पल्सेस एंड ग्रोसरी. ओके, सो दिस वाज थर्ड ऑप्शनल पार्ट दैट इज सब्जेक्ट लाइन. अभी तक हमने 3 ऑप्शनल पढ़े. फर्स्ट वन वाज personal notations or personal and other notations. Second one was attention line and third is subject line. Now comes the fourth one which is important, known as enclosure. Enclosure क्या है कि कभी कभी जब हम कोई लेटर फॉरवर्ड करते हैं तो हम लेटर के साथ में कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी हमें फॉरवर्ड करने पड़ते हैं.
उस टाइम हमें एनक्लोजर काम आता है. लेट अस सी व्हाट इज दिस. At times, along with the main letter, as mentioned in the letter, certain papers containing connected informations are enclosed. Certain papers connecting connected informations are enclosed in the envelope. This is called enclosure. This is called enclosure. For example, with an application for certain post, अगर कोई post के लिए हम application लिख रहे हैं तो copies of marksheet, certificates are required to be enclosed. The detail of enclosure is mentioned after signature beside the left margin. When there is more than one enclosure, then either the number is mentioned or they described one after another. अगर एक से ज़्यादा है तो या तो हम numbers mention कर सकते हैं या फिर one by one हम उसको mention कर सकते हैं. Let us see how enclosures are written. First example is enclosure total 3, or write preferring in this way. Write enclosure full and then mention one copy of higher secondary mark sheet, copies of mark sheet of 3 years of BCom, copies of BCom degree certificate. This is more preferable. Clear? So this is enclosure. जब letter के साथ हम कुछ extra attach करते हैं then it should be done in the enclosure. Clear? Next is carbon copy notation. Now what is carbon copy notation, popularly known as CC? At times a letter is meant for more than one institute or more than one department, then they should all come to know that the content of letter and each one do the needful in his her own way. In such letter after signatures, अब जो भी हम पढ़ रहे हैं इंक्लूजर से सारे एक ही जगह मेंशन होंगे आफ्टर सिग्नेचर बिसाइड द लेफ्ट मार्जिन. Among the optional parts, they all are mentioned as carbon copy notation and with instructions CC2. एनक्लोजर के बाद हम CC2 लिख सकते हैं. जब CC हम कब यूज करते हैं, जब कोई पर्टिकुलर एक लेटर एक या एक से ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स को हम सेंड करना चाहते हैं, दो से ज़्यादा डिपार्टमेंट से दो से ज़्यादा इंस्टीट्यूट को हम सेंड करते हैं, तब हम CC यूज करते हैं. जनरली CC2 का मतलब क्या है कि उनको पता चले कि हमने कहाँ ये लेटर भेजा है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई पर्टिकुलर स्कूल का इश्यू या स्कूल के टॉपिक के लिए लेटर लिख रहे हैं, तो अगर हम वो लेटर प्रिंसिपल, डायरेक्टर और मैनेजमेंट को लिख रहे हैं, देन वी विल बी राइटिंग एज CC2, फर्स्ट द प्रिंसिपल, देन द डायरेक्टर एंड देन द मैनेजमेंट. देखिए एग्जाम्पल में क्या है. CC2 नंबर 1 द मैनेजिंग ट्रस्टी शारदा पर्यावरण जागृति मंडल अहमदाबाद. नंबर 2 द कमिश्नर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स गांधीनगर. नंबर 3 द सेक्रेटरी कॉमर्स सेक्शन गांधीनगर. मीन्स हमने 3 एड्रेसेस पे ये पर्टिकुलर सेम लेटर भेजा है. क्लियर? देन इट इज नोन एज कार्बन कॉपी नोटेशन. कार्बन कॉपी 2. क्लियर? नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन लाइन. आइडेंटिफिकेशन लाइन क्या होता है? इन बिग इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इट इज वेरी लाइकली दैट 2 और मोर देन 2 पर्सन्स आर इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग लेटर. बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बहुत कॉमन बात होती है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, ड्राफ्टिंग का लेटर के लिए अपॉइंट किए जाते हैं. ओके. इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द एग्जीक्यूटिव में गिव डिक्टेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ द लेटर एंड एनी अदर एम्प्लॉय में टेक इट डाउन एंड इन शॉर्टन एंड टाइप इट. या तो 2 या 2 से ज़्यादा लेटर्स ड्राफ्टिंग के लिए है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हायर ऑफिशियल्स ने डिक्टेट कर दिया, सेक्रेटरी से शॉर्ट हैंड में टाइप नोट कर लिया, फिर उसको टाइप करके फॉरवर्ड करते हैं. तो इन सच सिचुएशन ये पता चले कि किसने मैसेज लेटर टाइप किया या फ्रेम किया है, उसकी आइडेंटिटी के लिए देयर नेम्स आर मेंशन्ड एज एन पार्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन लाइन. सो इन सच सिचुएशन, in order to create the identity of persons involved, their names are mentioned as a part of identification line. One of the occasional or optional parts of business letter mentioned after same place after signature left margin. Here the initials of the persons dictating the letter and the one typing it are mentioned separated by colon or slash. ओके. पहले जिसने डिक्टेट किया लेटर या जिसके बिहाफ पे लेटर जाएगा उसके इनिशियल्स एंड देन द वन हु हैज रिटर्न. फॉर एग्जांपल HDP colon JRT or HDP/JRT. That means it is understood that the executive with the initial HDP, RG Pathan or HDP has given the dictation and the one with the initial JR has typed it. Clear? So this is known as identification line. कि बड़ी बड़ी कंपनीज और कॉर्पोरेट्स में
गवर्नमेंट ऑफिशियल्स किस यूज करते हैं जहाँ दो या दो से ज़्यादा लोग को परमिशंस हो या अथॉरिटी हो लेटर ड्राफ्टिंग की। क्लियर? तो खुद की आइडेंटिटी बताने के लिए ये आइडेंटिफिकेशन लाइन यूज की जाती है। नेक्स्ट वन इज मेलिंग इंस्ट्रक्शन। मेलिंग इंस्ट्रक्शन इज वेरी इजी। जो कंटेंट ऑफ द लेटर है वो लेटर राइटर डिसाइड करेंगे कि उनको किस वे में डिस्पैच करना है, विच वे इट हैज टू बी डिस्पैच, ऑर्डिनरी पोस्ट से, रजिस्टर्ड पोस्ट से, रजिस्टर्ड एडी पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, whatever the way they want. So जनरली मेलिंग इंस्ट्रक्शंस क्या है? मेलिंग इंस्ट्रक्शंस एक तो लेटर में लेफ्ट साइड बिसाइड द सिग्नेचर मेंशन किए होंगे और इट इज प्लेस इधर द टॉप और एंड ऑफ द लेटर। एग्जांपल्स, बाय रजिस्टर्ड एडी पोस्ट और बाय कुरियर। तो फॉर एग्जांपल जिसने रिसीव किया उसको पता चला कि ये लेटर कुरियर से आना था तो मेरे पास कुरियर से ही आया है। अगर कुरियर से ना आके किसी और पर्पस की किसी और मीडिएटर के थ्रू आया, दैट मीन्स ये लेटर बीच में कहीं असेस हुआ है। जनरली कॉन्फिडेंशियल लेटर्स में मेलिंग इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं ताकि रिसीव करने वाले को पता चले कि ये लेटर डायरेक्टली मेरे पास ही आया है या नहीं। एंड द लास्ट वन इज पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट क्या है? आफ्टर मेंशनिंग ऑल द नेसेसरी डिटेल्स एज अ पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ लेटर, if letter writer wants to draw the attention of readers towards some significant matter, then in that case the optional part mentioned after signature it is mentioned with PS. ओके, लेटर फ्रेमिंग करते वक्त हमने पूरी डिटेल्स मेंशन कर दी, सारे रेगुलर पार्ट्स इंक्लूड कर दिए, सारे ऑप्शनल पार्ट्स इंक्लूड कर दिए। लेकिन लेटर लिखने के बाद अगर लेटर राइटर को ऐसा लगता है किसी एक पर्टिकुलर थिंग पे, किसी एक पर्टिकुलर मैटर पे फोकस करवाना है या फिर किसी एक पर्टिकुलर चीज वो लिखना भूल गए, देन दे कैन राइट इट एज अ पोस्ट स्क्रिप्ट। इट इज मेंशन्ड विद इनिशियल्स कैपिटल इन P.S. It should be noted that if writer forgets to mention some significant matter, then mention as a part of postscript, it suggests carelessness on his part. हाँ, अगर कोई चीज भूल गए हैं और लिखते हैं then it can suggest carelessness on his part. Although you can write using postscript, लेकिन generally postscript कब यूज होता है? कुछ चीज आपने इंपॉर्टेंट लिखी और वो मिस ना हो जाए लेटर रीडिंग में, तो उसको पोस्टस्क्रिप्ट में हम यूज करते हैं। और अगर आप कुछ भूल गए और उसको पोस्टस्क्रिप्ट में लिखना चाहते हैं, then it is advisable to redraft the letter, because generally postscript में अगर कुछ भूला हुआ आप लिखते हैं then it shows your carelessness. Okay, so यहाँ पे भी ये मेंशन किया है, it suggests it in such a situation it becomes advisable to redraft the letter. अगर आप कुछ भूल गए तो carelessness suggest होती है, so advisable is to redraft the letter. Okay, it is necessary formality to put signature after mentioning detail as a part of PS. अगर जनरली पोस्टस्क्रिप्ट सिग्नेचर के बाद लिखा जाता है, लेकिन अगर आपने पोस्टस्क्रिप्ट यूज किया है तो अगेन यू हैव टू साइन द लेटर मेंशनिंग डिटेल्स एज अ पार्ट ऑफ PS. Clear? So students, these were the 8 optional parts of letter which can be used if needed. These are not compulsories. Okay, among them subject line is the most used optional part. Okay, so if you have any problem in this, if you feel any doubt in this, please fill down the comment section. Till then, stay home, stay safe, happy learning.